everyone, welcome back. Please ignore the background for now. It's 10:30 p.m. here और मेरे में ज़रा सी भी ताकत नहीं है कि मैं ये पीछे का सारा ठीक से रखूं। और आप लोगों को टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बात का है. We are going to try heatless curls. I'm gonna show you in few minutes here कि कैसा दिखता है. I think it's very viral right now on the internet, so you guys might have seen it already. I ordered the heatless curl from Temu. I think $2 before tax के पहले $2 I think around आया था. It wasn't expensive at all. So now I've showered and बाल धोने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा I should dry my hair a little bit because it's already winter here and if I don't dry my scalp at least I'm gonna get cold very easily. अभी मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ क्योंकि I think this process is gonna go very long and I think अगर मैंने ऐसे कैसे ही रखा तो it's gonna take forever. And then to dry my scalp mostly, I started partitioning my hair. I didn't want to dry my hair. Mostly मुझे scalp को dry करना था और थोड़ी बहुत ही hair को dry करना था क्योंकि I think I still wanted to keep my hair wet for the heatless curls to work. अब जब मेरे हेयर थोड़े से ड्राई मोस्टली मैंने स्काल्प को ड्राई कर दिया है उसके बाद आई लाइक माई हेयर इज़ स्टिल वेरी वेट. आफ्टर दैट रिसेंटली आई हैव बीन यूजिंग विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम और वो लाइक लिटरली मैंने पूरी बॉटल फिनिश कर दी है एंड आई एम नॉट श्योर आई डोंट सी एनी रिजल्ट्स एज ऑफ नाउ. Maybe I have to use more of it to see the results. I don't know. But I've been using it and this is the other product that I used recently. और ये मुझे as a sample मिला था from Sephora. But I'm thinking to buy a bottle of this because it's really really good. It smells good and also like after applying it once your hair is dry you won't see frizzy hair at all. So I love that product. After I'm done combing I'm gonna show you the heatless curls that I got from Temu. I'm pretty sure you guys might have already seen it. So it came with 2 scrunchies like that and 1 hair clip और एक ये इतना लंबा सा आई थिंक ये वाज स्पंज इनसाइड पर ऐसा रॉड जैसा था. एंड देन आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ ऑफ हाउ टू डू इट, हाउ टू टाई योर हेयर अराउंड दैट रॉड और वट एवर दैट थिंग इज़ कॉल्ड. सो इस तरह से मैंने पार्टीशन कर दिया मेरे हेयर को पीछे से. इट डिडंट हैड टू बी इवन. Then taking the center of the head I'm gonna clip that rod. Yep, you can also put 2 clips if you think it's not steady enough, then you can definitely do that. Now for this part it's very important कि आप जो अपनी strands ले रहे हो थोड़ी जो फर्स्ट जो मैंने ली वो सिर्फ आगे से ली है पर बाद में यू विल सी दैट कुछ मैं आगे से ले रही हूँ और थोड़ी बाल पीछे से भी ले रही हूँ. एंड आई एम डूइंग दैट सो दैट एट द एंड ऐसा ना हो कि सिर्फ आगे के बाल आ गए एंड देन यू आर टेकिंग द बैक वंस लेटर. एंड देन एवरी टाइम यू डू इट मेक श्योर दैट यू पुल योर हेयर ताकि वो रॉड आपकी हेड से नज़दीक रहे. या माई हैंड्स वर हर्टिंग ऑलरेडी. आई थिंक द टाइटर इट इज़ इट्स बेटर.
और ये मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही थी. दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल वीडियो. I'm trying how it's gonna work, and I'm not sure कि at the end results कैसे होंगे, and if I'm gonna see, like, I know because I'm recording this after I know what happened, but this was just like a trial, like an experiment. I didn't had any idea if it's gonna work out or not. So I think for that you'll have to watch till the end to know if it's gonna work out or not. और फिर अभी सिर्फ थोड़े से ही बाल मेरे नीचे के बाकी रह गए थे. सो आई टाइड इट अराउंड लाइक दैट, टुक दैट वन स्क्रंची, और फिर उसको नीचे ऐसे टाई करना है. ज़्यादा मत खींच लेना वरना ऊपर की क्लिप सारे बाल लेके नीचे ना आ जाए. Yeah, so you tie it around like that, and then you're gonna look weird in the whole process. पर रिजल्ट्स अगर आपको ये सब करना है, अगर आपको हीट अप्लाई नहीं करनी है, then you have to do all of this, I guess. I did the same on the other side. The process is the same, so I'm gonna fast forward this process. And then tada, it was done. और मैंने लास्ट नीचे का हेयर जब मैंने किया, आई थिंक आई मेस्ड अप अ लिटिल बिट. और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे थे वेयर यू कैन टाई इट अराउंड, एंड देन एज आई सेड मैंने एक लास्ट हेयर रह गया था, एंड आई वाज वेरी टायर्ड, लाइक माय बाइसेप्स वर लिटरली हर्टिंग आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस. Yeah, and I couldn't tie it at the back. And now it was time for me to sleep. और मैंने देखा कि my dog was just patiently waiting for me to get everything done and turn off the lights. It's the morning after the night, and look at my hair. Honestly, ऐसे बालों के साथ इस तरह से सोना, it was so difficult. Because I like to sleep on one side, and having this around my head, sleeping on one side was very difficult. Time for reveal. Honestly, at this point I was very disappointed because it wasn't as good as I thought. Actually कुछ हुआ ही नहीं. And I think the reason for it is that my hair was very very wet. और मैंने एक ही कॉम्ब किया, एक ही बार सिर्फ ब्रश किया, और आई थिंक एक साइड के बाल तो पूरे ही चल, लाइक देयर वर नो कर्ल्स लेफ्ट, and I was very disappointed. So from one side I think I could see curls still, but on the other side maybe I didn't wrap it around quite well. So, and my hair was still like very very wet, so I think that was the reason that it didn't work out. And I was ready to go to work with that hair. In my lunchtime, this is the video how it looked. Again, it looks like beach curls, but it's not exactly how we see in the videos.
Now, obviously, I had to do a take two because I really wanted to make this work somehow. So, now this time I had my hair completely dry. Um, I saw a few more videos and I thought that maybe my hair was very wet, that's why the curls didn't stay. So, this time I made sure that they are dry. Now this time I did everything same except I used my brain cells, which I thought is perfect because I thought that I'm going to use hairspray so that I'll get those perfect curls. तो थोड़े वो curls like hair stay भी करेंगे in place overnight. And this is me the next morning. सारा कुछ बिखर गया था, सिर्फ आई वॉज हैप्पी कि नीचे के जो मैंने हेयर टाई किए थे वो नहीं गए जहाँ पे मैंने हेयर स्प्रे डाला था. फिंगर्स क्रॉस्ड. और मैं बस प्रे कर रही थी कि दिस टाइम इट वर्क्स. एंड ऑनेस्टली इवन इफ इट वर्क्स दिस टाइम आई वुड नॉट रिकमेंड यूजिंग हेयर स्प्रे ओवरनाइट बिकॉज उसकी जो स्मेल थी वो ओवरनाइट इतनी वियर्ड आ रही थी. And I didn't like the texture of my hair. जो ओवरनाइट मैंने हेयर स्प्रे रखा था उसके वजह से हो गया था. So at this point I could definitely see curls at the end. ऊपर तो वो रहा नहीं था, सो ऊपर इतना नहीं हुआ था, पर नीचे से I think I could see waves already. I'll show you a close-up. And because of the hairspray, I think even after combing, the curls were still staying like that. So it looked good, but I don't think I'll try this again because hairspray की वजह से my hair were very sticky. I had to smell that overnight and it wasn't very much fun. So this was my experience with heatless curls. Honestly, I'm not very happy with the experience. If I've done something wrong, I'm not sure. The first one was a mess for sure, but I think I won't probably do this again. Now I'll show you how it looked at the end of my shift. This is how it was. Exact super jitne curls nahi the, but still I could see waves.